Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the cross product. Now I am discussing the numericals of cross product. In cross product, you can say cross product numericals. First question is, right, in cross product numerical, first is show that the vector a equal to 2I cap minus 3j cap minus k cap and b equal to minus 6I cap plus 9j cap plus 3k cap are parallel. You have to prove these vectors to be parallel. So we know that for parallel vectors, what is the value of a cross b? For parallel or anti-parallel vector, a cross b must be equal to 0. Okay, so here we will find a cross b. So in the last lecture I told you how we can find out a cross b. यहाँ आप I cap, j cap, k cap लोगे. Then you will put the coefficient of a 2, minus 3, minus 1, right? Then you have to take b, minus 6, 9 and 3. Put the sign over this plus, minus, plus, right? Now it will become, if you want to see the coefficient of I cap, cut this row and column, right? Cut this row, minus 3 into 3, it is minus 9. When you move from left to right, then it is taken to be positive, and right to left, minus of minus 9, it is then minus j cap. Minus j cap is, second coefficient is minus j cap is 2 into 3, 6, right? 2 into, cut this row and column, 2 into 3, 6, and then from right to left when you come, minus of plus 6, right? Next is plus k cap. Plus k cap is 18, 2 into 9, 18, 18 minus of minus 3 into minus 6 plus 18, so it get cancel out. ये कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या आ गया? दिस इज 0 I cap minus 0 j cap plus 0 k cap. So what does this show? This is a 0 vector. This means a cross b is, when a cross b is 0, this implies a is parallel to b, right? A is parallel to vector b. Next question, if torque acting on a body is, find the torque acting on a body, if force is 3I cap plus 2j cap minus k cap Newton, and the displacement, or you can say radius factor, is I cap plus j cap plus 6k, right? This is in meter. You have to find torque. So already I have given you torque is the cross product of R and F. It is a torque is a cross product of R and F. So how you will calculate torque? Torque is, you will find it by determinant method, I cap, j cap, k cap. Student, here you must know the order. R पहले लिखना है, फिर k लिखना है. R is, what are the coefficient of R? 1, 1, 6. 1, 1, 6. What are the coefficient of F? 3, 2, minus 1. This is plus, this is minus 1, this is plus. So you can solve it. Plus I cap, cut this row and column, this is minus 1, this is 6 into 2, 12, this is minus of 12. Now minus j cap, cut this row and column, this is 1 into minus 1, then it is minus of 18. Plus k cap किया, this is 2 minus of 3. So ये कितना आ जाएगा? minus 13 I cap plus 19 j cap minus k cap. So what is this? This is the torque, right student? This is very important question, how we can find the torque acting on a body. Now the next is calculate, find a unit vector perpendicular to both
A equal to 2i cap plus j cap plus k cap, and B equal to I cap minus j cap plus 2k cap. You have to find a unit vector perpendicular to both of these vectors. आपको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है. तो स्टूडेंट्स हमने कहा था C क्या होता है, दैट इज इक्वल टू A क्रॉस B. सो C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, राइट. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, C, और उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो पहले हम C फाइंड आउट करते हैं. C वेक्टर इज A क्रॉस B. A क्रॉस B लेने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज I कैप j कैप k कैप. A क्रॉस B, A is 2 1 1 1, B is 1 minus 1 2. पुट द साइन प्लस माइनस प्लस, राइट. क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए अब प्लस I कैप, कोफिशिएंट लिखेंगे, कट दिस रो एंड कॉलम. 1 इंटू 2 2, माइनस ऑफ माइनस 1, राइट. माइनस j कैप, cut this row and column, this is 4 minus 1, 2 into 2 4 minus 1, plus k cap लिखना आपने. k cap is 2 into minus 1 minus 2 minus 1, so it become 3i cap, 2 plus 1 3i cap minus 3j cap, and this is minus 3k cap. This is a vector C which is perpendicular to both A and B. This means A cross B is a vector which is perpendicular to both A and B. I want to calculate unit vector. This is vector divided by its magnitude. This means 3i cap minus 3j cap minus 3k cap under the root of 3 square plus minus of 3 square plus minus 3 square. तो ये कितना आ जाएगा, this is 3, you can take common. This is I cap minus j cap minus k cap. This is 9 plus 9 plus 9 root 27. You can write it as, this is 3 I cap minus j cap minus k cap 3 root 3. तो ये आपके पास कितना आ गया, C cap is I cap minus j cap minus k cap divided by root 3. This is a unit vector perpendicular to both A and B. In the same way, you have to find the next application, that is calculate the area of parallelogram. Next question is calculate the area of parallelogram. Calculate the area of parallelogram whose two adjacent sides are A equal to 3i cap plus 5j cap and B equal to minus 3i cap plus 7j cap. ठीक है, आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है, हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस. तो हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस में पढ़ा था. फिजिकल सिग्निफिकेंस में द मॉड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. दिस इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, A क्रॉस B. A क्रॉस B अभी आपको पता है डिटर्मिनेंट मेथड से आप निकालेंगे. दिस इज़ I कैप J कैप K कैप. दिस इज़ A इज़ 3 5 0. दिस इज़ माइनस 3 7 0. तो पहले हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मॉड ऑफ A क्रॉस B इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. Yeah, that we have discussed. Put here sign plus minus plus. So now it become plus I cap. यहाँ पर आप इसको cut this row and column. 5 into 0 0 minus 7 into 0 0. अब minus j cap. Minus j cap में भी 3 into 0 0 0 into minus 3 0 plus k cap. Cut this row and column. This is 7th आइए. 3 into 7 21 minus of minus 15, क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं वी विल टेक इट एज पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट आते हैं इट इज़ नेगेटिव. सो इट इज़ 36k cap. दिस इज़ A क्रॉस B. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट मॉड ऑफ A क्रॉस B. मॉड ऑफ A क्रॉस B इज़ अंडर द रूट ऑफ 36 स्क्वायर, राइट. तो इट इज़ 36 यूनिट्स. दिस इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. This is area of parallelogram, that is 36 unit, right student. Now after this I have to discuss the scalar triple product.
what is scalar if the vector A, B and C are, if there are three vectors A, B and C are lie in a plane, or they are, you can say, coplanar, that is they are coplanar, then their A dot B cross C is equal to 0. Right? Why? This is said to be A dot B cross, this is said to be scalar triple product. ये क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0. A dot B cross C is 0. Right? And this is the volume. अगर if these three vectors are not lying in a plane, if A, B and C are not lying in the plane, then and they form the edges of a parallelopipe, then volume of parallelopipe is given by A dot B cross C. Volume of parallelopipe is given by A dot B cross C. और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट आई विल टेल यू. आइदर यू कैन टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस विद एंड देन टेक द डॉट प्रोडक्ट, और देर इज़ वन मोर मेथड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द न्यूमेरिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the edges of a parallelopipe. Question is, the edges of a parallelopipe are given by the vectors 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. ठीक है, ये फर्स्ट एज है, एंड द सेकेंड एज इज 4j cap and 5j cap plus mk cap. ये आपका थर्ड एज है. क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m, what should be the value of m so that the volume of parallelopipe is 24, so that the volume of parallelopipe is 24. तो volume of parallelopipe में हम ये लिख सकते हैं, volume of parallelopipe is given by स्केलर वेक्टर, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C. और इसको हम कैसे निकालते हैं? दिस इज गिवन टू यू 24 A डॉट B क्रॉस C. देर इज़ ऑल्सो वन डिटर्मिनेंट मैथड टू फाइंड दिस A डॉट B क्रॉस C. आपने इसमें क्या करना है, तीनों वेक्टर लिखने हैं, उनके कोफिशिएंट 2, 3, 4. पहला 2, 3, 4. सेकेंड वेक्टर आप 0 i कैप है, दिस इज़ 4, 0. देन दिस इज़ 5j कैप 5 और mk कैप. अब आपने इसको वही डिटर्मिनेंट मेथड से ही करना है, दिस इज़ प्लस माइनस प्लस. तो अब हम लिखेंगे जैसे +2, कट दिस रो एंड कॉलम, 4m माइनस 0, 4m माइनस 0, -3, कट दिस रो एंड कॉलम, दिस इज़ 0 माइनस 0, कट दिस रो, 0 इंटू m 0, 0 माइनस 0 0, +4 कट करोगे 0 माइनस 0. और ये क्वेश्चन में कितना गिवन है? 24. तो ये आ गया आपके पास 8 है. तो m कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3. वन क्वेश्चन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप. 3 edges are given to you. You can find the scalar triple product in this method, or either you can solve it completely. Next is, one question is asked, what is the angle between A plus B and A cross B? क्या होगा इन दोनों के बीच का एंगल? व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन A plus B and A cross B? देखो, A plus B दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, और A cross B क्या है? परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B. अगर ये A है और ये B है, ठीक, ये एक प्लेन में है, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा A plus B. और जब हमने अभी क्या किया, A cross B इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू A एंड B, तो एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री. एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री, राइट.
तो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन डिस्कस एक किया था कॉम्पोजिशन ऑफ फैक्टर्स. Composition means addition. Composition of factors. I have to discuss two application of this. First is flying of bird is an example of composition of factor. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर आपके पास ये बर्ड है, ठीक है, ये इसके विंग्स हैं, और जब ये बर्ड फ्लैप करता है तो एयर पे कहाँ फोर्स लगाता है? डाउनवर्ड. एयर पे कहाँ फोर्स लगाता है? डाउनवर्ड. ये फोर्स मिलता है इसे, और इसकी रिएक्शन टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ है. कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट जो होगा दिस विल गिव यू द अपवर्ड फोर्स टू द बर्ड. इफ़ यू कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम देन दिस रिजल्टेंट गिव रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस make the bird fly in upward डायरेक्शन. कहाँ फ्लो करता है इसकी वजह से? अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, एक ये फ्लाइंग ऑफ बर्ड, दूसरा आता है वर्किंग ऑफ स्लिंग. वर्किंग ऑफ स्लिंग. स्लिंग मीन्स गुलेल, वर्किंग मीन्स स्लिंग मीन्स गुलेल. तो इसमें हमारी ये गुलेल होती है लाइक इन दिस वे, राइट. ये यहाँ पर इसका एक हैंडल है और इधर एक स्ट्रिंग अटैच होती है. आप यहाँ स्टोन है, जब आप इसे स्ट्रेच करते हैं तो इसमें फोर्सेस जनरेट होते हैं. टेंशन इज़ द फोर्स जनरेटेड इन द स्ट्रिंग. और अगर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो इसका रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट ऑफ दिस मेक दिस स्टोन टू मूव फॉरवर्ड. देखो, आपने जैसे ही स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, एज यू स्ट्रेच द स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने से क्या हुआ? एक टेंशन क्रिएट होती है स्ट्रिंग के अंदर टूवर्ड द फिक्स्ड एंड, और द रिजल्टेंट ऑफ दिस टेंशन, resultant of these tension make the object to move in forward direction, right. So this is the example of composition of factors. Okay, thank you. So revise this dot and cross product.